Namaskar, future officers. Welcome to the T2E learning family. 3 channels, 1 goal. General studies, reasoning and aptitude. Let's begin. टेंशन छोड़ो, T2E से जोड़ो। चलिए आज का कॉन्सेप्ट इजी बनाते हैं। हेलो नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रिक्स टू इजी। आप पहले से ही मेरे यूट्यूब चैनल पे जुड़े हो तो आपने कुछ नोटिस किया होगा, मेरा यूट्यूब चैनल का नाम बदल गया क्योंकि सम टेक्निकल ग्लिचेस के वजह से मुझे मेरा यूट्यूब चैनल का नाम बदलना पड़ा। सिर्फ यूट्यूब चैनल का नाम बदला है, मेरा मिशन वैसे ही जारी रहेगा जैसे पहले जारी रहा था। टुडे पहले टॉपिक से आने से पहले यू विल बी थिंकिंग दैट पहले ही विल बी एक्सप्लेनिंग इन इंग्लिश ओनली, व्हाई ही शिफ्टेड टू हिंदी। मुझे पर्सनली थोड़े स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए थे, सर इफ यू कैन एक्सप्लेन इन बाइलिंगुअल इट इज सो इजी टू अंडरस्टैंड बिकॉज ऑफ वी हैव लैक ऑफ इंग्लिश नॉलेज। मुझे आप इंग्लिश में बता रहे तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है। सो ऑन द एडवाइस ऑफ द स्टूडेंट्स आई हैव शिफ्टेड द क्लास विल बी टेकन इन बाइलिंगुअली। आज अपन पार्ट 2 ऑफ सिलोइज्म पढ़ रहे हैं। इन पार्ट 1 वी हैव डिस्कस्ड अबाउट व्हाट इज सिलोइज्म, और टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स, और वन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, फोर्थ 2 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, and concepts related to it. आज before going into the class we will be recalling what are the topics we have been discussed in the previous video. Syllogism के बारे में पढ़ा है। वन टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स, टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स में 4 टाइप्स थे। ए टाइप एक था, और ई टाइप था, आई टाइप था, और ओ टाइप था। इफ यू वॉचिंग दिस वीडियो it is better to watch my previous video to understand better, क्योंकि स्टूडेंट्स कभी भी हरी में रहते हैं। इन हरी वो क्या करते हैं कि बिफोर वॉचिंग द फर्स्ट वीडियो वो डायरेक्टली सेकंड वीडियो वॉच करते हैं और दे विल बी लैक ऑफ नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट और द टॉपिक विच हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियोस। इसलिए मेरा एडवाइस है कि आप पहली वीडियो देख के इस वीडियो पे आइए। और एक स्टेटमेंट क्वेश्चंस देखे हैं, 2 स्टेटमेंट और कॉन्सेप्ट्स लर्न किए हैं। दैट मीन्स अपन क्या लर्न किए हैं, फर्स्ट वाला क्या है, अगर स्टेटमेंट को अपन देखना है, अगर ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो विद द यूज ऑफ स्टेटमेंट्स, टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेकंड वाला क्या है बोल तो इनकम और एक्सपेंस। इनकम कह के स्टेटमेंट में रहेगा, एक्सपेंड कह के कंक्लूजन में रहेगा। आफ्टर दैट थर्ड वाला क्या पढ़े कि टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स पढ़े हैं, 1 टाइप, 2 टाइप, 3 टाइप। आज अपन पढ़ने वाले हैं अगर 3 टाइप स्टेटमेंट्स अगर एग्जामिनर इन एग्जाम देन हाउ टू टैकल इट। तो विदाउट एनी डिले वी विल बी स्टार्टिंग टुडेस वीडियो, दैट इज 3 type statements. How to do 3 type statements by using 150 method.
3 स्टेटमेंट क्वेश्चंस। 3 स्टेटमेंट क्वेश्चंस में क्या रहेगा कि एग्जामिनर आपको ए बी सी, इफ अगर ये एक स्टेटमेंट, बी एक स्टेटमेंट, सी एक स्टेटमेंट, अगर 3 स्टेटमेंट्स दिए तो बेस्ड ऑन these statements how can we find out the conclusions and how can you identify whether the statements given is true, false or cannot be determined। तो अपन एक स्टेटमेंट का एग्जांपल लेंगे और वो एग्जांपल से समझेंगे। फर्स्ट एग्जांपल क्या है? ऑल कैट्स आर birds, some all none cats are animals। थर्ड वाला क्या है? some animals are क्या? some animals are birds। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेंगे, अगर इस टाइप के क्वेश्चंस को वो कंक्लूजन देगा। ऐसा कंक्लूजन क्या है? ऑल बर्ड्स आर एनिमल्स, none birds are cats, some birds are animals, some birds are not animals। Fourth one will be some animals are birds। तो अगर स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट है, वो बेस्ड ऑन 3 स्टेटमेंट्स अपन डिसाइड करना है कि इस 3 स्टेटमेंट्स में हाउ मेनी कंक्लूजन्स विल बी करेक्ट। फॉर एग्जांपल अगर 50-100 मेथड लियो तो ए टाइप में आपको सब्जेक्ट 100 रहेगा, सब्जेक्ट का वैल्यू, और प्रेडिकेट का वैल्यू 50 रहेगा। नन में 100 और 100, इधर सम में 50 और 50। द वैल्यूज गिवन इन द स्टेटमेंट आर नोन एज इनकम, इसको इनकम बोलेंगे। और जो भी वैल्यूज कंक्लूजन में देते हैं उसको एक्सपेंस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑल को 100 और 50 रहेगा, इसको एक्सपेंस बोलते हैं। लाइक दैट, टू सॉल्व द क्वेश्चन we have to check whether the statement is positive, negative, and second one is we have to check based on income and expenses। फर्स्ट अपन चेक करते हैं कि all birds are animals, ये all birds are animals कॉम्बिनेशन ऑफ 2 स्टेटमेंट्स है और या डायरेक्ट स्टेटमेंट्स है। अगर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 स्टेटमेंट्स है तो उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट स्टेटमेंट, अगर डायरेक्ट है तो उसे बोलते हैं डायरेक्ट स्टेटमेंट्स। इधर ऑल कैट्स और बर्ड्स, ऑल बर्ड्स आर एनिमल्स मीन्स ऑल बर्ड्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट है। कॉमन टर्म 100 है तो नो इश्यू है, वी कैन मूव। बट कॉम्बिनेशन ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है। कभी भी अपन प्रीवियस लेक्चर वी हैव लर्न दैट इफ there will be questions combination of positive and negative, then will be result is negative। if negative plus positive, negative, positive plus positive, the result will be positive। if both are negative, there will be no definite result, definite result नहीं रहेगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव का ऑलवेज कंक्लूजन विल बी नेगेटिव, बट इधर ऑल है तो
ये पॉजिटिव है, सो इट इज रॉन्ग। सेकंड वाला क्या है, नन बर्ड्स और कैट्स, बर्ड्स और कैट्स, तो इधर कॉमन क्या है, एनिमल से, कॉमन टर्म पे 100 है, तो इट विल बी नेगेटिव, पॉजिटिव का कंक्लूजन नेगेटिव होगा, नेगेटिव है, तो फर्स्ट लॉ इट ओबेज फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ क्या है बोल तो एक्सपेंस और इनकम शुड बी मैचेस विथ मैचेस बोल तो अगर अपने पास 100 रुपीज है, फॉर एग्जाम्पल एक आदमी हर महीने 100 रुपए कमा रहा है, तो वो 100 रुपए भी खर्च कर सकता है और 50 रुपए भी खर्च कर सकता है, मगर एक आदमी सिर्फ 50 रुपए ही कमा रहा है, मगर वो 100 रुपए 50 रुपए 100 रुपए नहीं स्पेंड कर सकता है, मगर 50 रुपीज स्पेंड कर सकता है। बेस्ड ऑन दीज क्राइटेरिया अपन देखना है कि ये सेटिस्फाई हो रहा नहीं। नन को 100 और 100 रहेगा वैल्यू, पॉजिटिव नेगेटिव का रिजल्ट नेगेटिव होगा, तो फर्स्ट वाला सेटिस्फाई है, सेकंड वाला देखना पड़ेगा। बर्ड्स और कैट्स 100 है, इधर एनिमल्स पे इधर कैट्स पे कितना है, 100 है, बर्ड्स पे 50 रुपए है, मगर इधर 100 है, तो दिस इज ऑल्सो नॉट सेटिस्फाइड। थर्ड वाला क्या है, सम बर्ड्स आर नॉट एनिमल्स, मीन्स सम बर्ड्स आर नॉट एनिमल्स बोल तो बर्ड्स और एनिमल्स मीन्स ये डायरेक्ट स्टेटमेंट है, ये इसे बोलते हैं डायरेक्ट स्टेटमेंट। ये दो क्या है, इनडायरेक्ट स्टेटमेंट है, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट है और ये नेगेटिव है, मगर इधर पॉजिटिव है, मीन्स दिस इज ऑल्सो नॉट सेटिस्फाइड। सम एनिमल्स और बर्ड्स, थोड़े एनिमल्स बर्ड्स है बोल रहा है, सम एनिमल्स और बर्ड्स, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट है, ये भी किसका, थर्ड स्टेटमेंट का डायरेक्ट स्टेटमेंट है, सो इट वर्क्स। तो आंसर क्या होगा, ओनली 4 follows। This is the main concept of how to tackle if the examiner will be giving 3 statements type questions in syllogism। अब अपन थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अगर आप नोट्स बना रहे तो अच्छा है, और नोट्स बना रहे तो मैं बोलते रहे तो आप एग्जाम नोट्स कॉपी कर लियो तो इट विल बी वेरी गुड। पुट ए नोट इन योर कॉपी इफ यू आर कॉपिंग, नोट बोल के हेडिंग लगा दीजिए, और आई विल बी writing some important points. Based on that points, you can solve the questions based on 3 statements. Note, first point क्या है बोल तो, to obtain 3 statements का ये प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर के हिसाब से चले तो वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस विद इन सेकेंड्स। टू ऑब्टेन रिजल्ट्स देयर शुड बी मिनिमम 3 statements required। That means if you want to solve 3 statement types of questions, we should require 3 statements। Second point क्या है कि if one statement is negative, then whole result will be negative। थर्ड पॉइंट क्या है कि if 2 or more statements are negative, then there will not be any result। कौन सा भी रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको।
my goal, my aim is to, before writing these points, I have given example. वो एग्जाम्पल से आपको पता चल गया होगा how we have operated these noted points, that is the procedure on the questions to solve. Please copy this. These are the important points. ये important points से ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. अपन बात करें हैं अभी तक. If you want to get the results, what are the procedures you should follow? If the statement contains some type of statement, in statement the common term contains 50 value on both the statements. For example, अगर some books are white, all pencils are white, तो ये सब्जेक्ट का वैल्यू सम में कितना रहेगा 50, इसमें भी 50, ऑल के उसमें सब्जेक्ट 100 और इसमें. इफ वी सी हियर द सब्जेक्ट, there is two common terms, white and white, but the value of both of them is 50 and 50. So this is the example. That means in the statement the common term contains value 50 on the both statements. इधर भी 50 है, इधर भी 50 है. अगर स्टेट कॉमन टर्म पे, अगर बोथ स्टेटमेंट्स, अगर फॉर एग्जांपल ये सम फर्स्ट स्टेटमेंट, ये सेकंड स्टेटमेंट है, अगर इधर कॉमन टर्म पे कौन से भी स्टेटमेंट में इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी स्टेटमेंट कॉमन टर्म पे 100 रहे तो देन यू कैन गो फॉर फर्दर स्टेप्स. अगर कॉमन टर्म पे ही दोनों स्टेटमेंट्स में भी कॉमन टर्म पे 50 वैल्यू है तो वी कैन सिंपली राइट दैट नाइदर 1 और 2 फॉलोज ऑप्शन को डायरेक्टली सेलेक्ट कर सकते हैं. और एल्स इन द अपकमिंग वाले either one or two follows type के क्वेश्चंस वी विल बी डिस्कसिंग. अगर either one or two ऑप्शंस गिवन दिए, अगर टाइप बेस्ड ऑन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस अगर क्वेश्चंस पूछे हैं तो हाउ टू टैकल इट, वो भी अपन फर्दर दिस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. इफ यू कॉपी दिस, नोट कर लियो तो अपन एक PYQ सॉल्व करेंगे. दैट इज रिसेंटली 2025 में आस्क क्वेश्चन है, वो RRB NTPC ग्रेजुएट में पूछा सो क्वेश्चन है वो. वी विल बी डिस्कसिंग हाउ द एग्जामिनर, आपको भी पता चलेगा कि अगर एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन टाइप्स पूछेगा. स्टेटमेंट है,
all the locks or keys. सेकंड स्टेटमेंट क्या है बोल तो all the keys are bats. Some watches are bats. RRB NTPC 2025 क्वेश्चन है. कंक्लूजन्स पे लिख लेंगे. ओके, कंक्लूजन्स. Conclusions. First one, some bats or locks. Second is some watches or keys. Third one is all the keys or locks. Solve the question. इधर स्टेटमेंट क्या दिया है? All the locks or keys, all the keys or bats, some watches or bats. First, we have to see the conclusions. Some bats or locks. ये कौन सा क्वेश्चन? अगर ये इनडायरेक्ट स्टेटमेंट है या डायरेक्ट स्टेटमेंट. फर्स्ट वन इज यू हैव टू चेक इट इज अ डायरेक्ट स्टेटमेंट और indirect statement. Second one is we have to check whether it is a positive or negative statement. Third one you have to check is income and expense. अगर if you are following 150 method, ये 3 steps check करना पड़ेगा आपको. After checking these 3 statements, if it is following or obeys these laws, then it will be written as follows. That means if first conclusion follows all these laws, then only one follows. Like that. अगर फर्स्ट स्टेप क्या है, अपने को सब्जेक्ट और प्रेडिकेट्स के वैल्यूज को वी हैव टू देख चेक. राइट, ऑल में 100 और 50, ऑल में 100 और 50, सम में 50 और 50. फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? सम बैट्स और लॉक्स. इधर दिस इज अ कॉमन, इज अ कॉमन, कॉमन 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 है. तो इधर 50 और 100. सो ये दो इनडायरेक्ट स्टेटमेंट है. इट इज ओबेइंग द फर्स्ट वन, दैट इज कॉमन टर्म पे 100 है. तो सम बैट्स और लॉक्स, बैट्स और लॉक्स ये इधर है. बैट्स के ऊपर वैल्यू क्या है? 50 है. लॉक्स के ऊपर वैल्यू क्या है? 100 है. हमारे इधर 50 है. तो सम के केस में वैल्यू चेक नहीं करना पड़ेगा. सेकंड, फर्स्ट वन फॉलोज. सेकंड वन क्या है? सम वॉचेस और कीज. सम वॉचेस और कीज, इधर कॉमन वैल्यू 50-50 है. सो 50-50 रहेगा तो इट इज नॉट ओबेइंग द लॉ, इट इज रॉन्ग. थर्ड वन क्या है? ऑल द कीज और लॉक्स. All the keys or locks, keys or locks, that is it is a direct statement. You can see all the locks or keys, all the keys or locks, ये direct statement है. तो direct statement में keys पे वैल्यू क्या है? 50 है, मगर इधर 100 है. so it is also not right. तो आंसर क्या होगा? only one follows. थ्री स्टेटमेंट पे और एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड वी विल बी हेडिंग टू फोर्थ टाइप क्वेश्चन.
स्टेटमेंट क्या आएगी, सम बॉल और बैट, नो बॉल और टॉय। थर्ड वन क्या है कि ऑल डॉल्स और टॉय। कंक्लूजन 1 2 3। कंक्लूजन, अगर आप कंक्लूजन देखें तो फर्स्ट वन ही इज आस्किंग सम balls or some ball or doll. Second one is no ball or doll. So first we have to check, फर्स्ट स्टेप क्या चेक करना है, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो द फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिंगल, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्टेटमेंट्स, वेदर इट इज अ डायरेक्ट स्टेटमेंट, वो चेक करना है। सम बॉल और डॉल, बॉल और डॉल, ये सेकंड और फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट्स को कंबाइन करो तो दी स्टेटमेंट्स का रिजल्ट अपने को आया है। तो यहां अपन देख सकते हैं ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो कॉमन क्या है, इधर 100 100, ये 50 है, 100 100 100 50, तो कॉमन पे 100 है, तो फर्स्ट सेटिस्फाई हो गया कि कॉमन टर्म पे 100 है। सेकंड क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव का नेगेटिव रहना है, मगर इधर पॉजिटिव है, तो फर्स्ट वन रॉन्ग। सेकंड वन क्या है, नो बॉल और डॉल, तो डॉल और बॉल, कॉम्बिनेशन ऑफ बॉल एंड डॉल, हाँ ये भी सेकंड और फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट का कॉम्बिनेशन है, बॉल और डॉल। तो पॉजिटिव नेगेटिव का नेगेटिव है, तो इट सेटिस्फाइज सेकंड ऑल्सो। फर्स्ट क्या देखना है अपने को, कॉमन टर्म्स पे 100 वैल्यू है या नहीं है, कॉमन टर्म पे 100 है, फर्स्ट सेटिस्फाई हो गया। सेकंड वन क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव का नेगेटिव होना चाहिए, वो भी सेटिस्फाई हो गया है। थर्ड वन वी हैव टू चेक इज whether it is satisfying or not, वैल्यू चेक करना है, थर्ड वाला वैल्यू, दैट इज बॉल पे कितना है वैल्यू 100 है, डॉल पे कितना है वैल्यू 100 है। सो सेकंड ओनली टू सेकंड कंक्लूजन फॉलोस। ये कौन सा क्वेश्चन है बोल तो, IBACIO 2 2025 का क्वेश्चन है ये। कॉपी कर दो, ये 3 स्टेटमेंट का आई विल बी एक्सप्लेनिंग वन ट्रिक। ट्रिक क्या है कि दिस इज कॉल्ड चेन रूल। चेन रूल एक ट्रिक है। चेन रूल क्या है कि इन 3 स्टेटमेंट्स, 3 स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन में 3 स्टेटमेंट रहेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अगर फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट पे कॉमन टर्म पे 100 है और इट विल बी सेटिस्फाई, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट पे भी कॉमन टर्म पे 100 है, तो ये भी सेटिस्फाई, देन द रिलेशन बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड विल बी पॉसिबल। इफ फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट से थर्ड सेकंड पे रिलेशन नहीं बना, दैट इज कॉमन टर्म पे 100, कॉमन टर्म पे 100 नहीं है और वो स्टेटमेंट्स और नेगेटिव, तो रिलेशन नहीं बना, सेटिस्फाई नहीं हुआ। और सेकंड और थर्ड पे रिलेशन बन गया, कॉमन टर्म पे 100 है
और बोथ अगर टू स्टेटमेंट्स सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट नेगेटिव भी एक ही है तो रिलेशन बन गया। तो फर्स्ट और थर्ड में रिलेशन नहीं बनेगा क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड में नहीं बना। फर्स्ट सेकंड थर्ड इसमें नहीं बना, इसमें नहीं बना, तो भी फर्स्ट और थर्ड में रिलेशन नहीं बनेगा। अगर आप इस ट्रिक को रिमेंबर रखेंगे तो इट इज इजी टू सॉल्व द क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन। अब अपन 4 टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स को कैसा सॉल्व करेंगे यूजिंग 150 मेथड वी विल बी लर्निंग। फोर स्टेटमेंट मोस्टली एग्जाम में तो 2 और 3 ही पूछेगा, बट if you go for mains examination there is highly possibility of asking 4 questions, 4 statements। 4 statements में before going into the concept we will be learning how the 4 statements type question will be looks। फर्स्ट वन क्या है, एग्जाम्पल लिए तो some animals are living beings। सेकंड वन क्या है कि all living beings are cats। some cats are none cats are human beings। I will be writing these questions, I will be taking example by my own, I am not copying from any textbook or any material। some human beings are not living things। some human beings are not what we can write machines। so from this question we have understood that in 4 statement type questions there will be 4 statements। first point क्या है, to get result they should be minimum, मैं बड़ा लिखाऊंगा, you will be not, इधर नीचे लिखाऊंगा, मशीन्स को रब कर रहा हूं, इधर लिख लिए छोटा सा। प्लीज नोट द पॉइंट्स व्हाट आई एम राइटिंग। फर्स्ट वन नोट में लिखिए, देखने में दिक्कत हो तो आई विल बी रीडिंग आउट। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि टू ऑब्टेन रिजल्ट्स there should be minimum of 4 statements। 4 statements रहना चाहिए। सेकंड वन क्या है कि if one statement is negative then whole conclusion or result will be negative।
Third one is, if both statements negative, then no result, रिजल्ट ही नहीं बनेगा. 3 पॉइंट्स कॉपी कर लीजिए. फोर्थ पॉइंट क्या है कि if the common term value 50 is there in both statements, then no possible conclusion, कंक्लूजन नहीं रहेगा, तो रॉन्ग हो जाएगा. क्वेश्चन को जाने से पहले वी विल बी राइटिंग द चेन रूल फॉर फोर्थ स्टेटमेंट क्वेश्चंस. Chain rule. After writing chain rule, we will be solving the question. Chain rule. First one क्या है कि 1 2 3 4. We have 4 statements. That's why 4. अगर फर्स्ट और सेकंड पॉसिबल हो गया है स्टेटमेंट, सेकंड और थर्ड भी पॉसिबल हो गया है, थर्ड और फोर्थ भी पॉसिबल हो गया है, तो रिलेशन बिटवीन 1 and 3 इज पॉसिबल, 1 and 4 is possible, 2 and 4 is possible. Second one is first, second, 3, 4. फर्स्ट और सेकंड का स्टेटमेंट नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ एनीथिंग. दो स्टेटमेंट नेगेटिव भी हो सकते हैं, कॉमन टर्म पे वैल्यू 100 भी नहीं हो सकता है. तो इन द बोथ, इफ द बोथ केसेस आर नॉट सेटिस्फाई, द रिलेशन नहीं बनेगा. तो सेकंड और थर्ड में बने, अगर बनता है और थर्ड और फोर्थ में भी बनता है, तो व्हाट आर द पॉसिबल टाइप्स ऑफ रिलेशंस वी कैन एक्सपेक्ट. फर्स्ट और थर्ड में नहीं बनेगा, फर्स्ट और फोर्थ में भी नहीं बनेगा, मगर सेकंड और फोर्थ में बनेगा. थर्ड वाला क्या है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट में रिलेशन नहीं बना, बन गया, सेकंड और थर्ड में नहीं बना, थर्ड और फोर्थ में बन गया, तो फर्स्ट और थर्ड में रिलेशन नहीं बनेगा, फर्स्ट और फोर्थ में भी नहीं बनेगा, सेकंड और फोर्थ में भी नहीं बनेगा. इफ वी गो फॉर फोर्थ वन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, अगर इसमें फर्स्ट और सेकंड में बन गया, सेकंड और थर्ड में बन गया, थर्ड और फोर्थ में बन गया, तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ में नहीं बना, तो फर्स्ट और थर्ड में रिलेशन बन गया, फर्स्ट और फोर्थ में नहीं बना, सेकंड एंड फोर्थ में भी नहीं बना. कॉपी दिस 4 चेन रूल्स. ये आपको फर्दर अपन क्वेश्चन सॉल्व करते समय बहुत यूज होएगा. अब अपन 4 टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और फर्स्ट अपन ये सॉल्व कर लेंगे. रब कर रहा हूं, कंक्लूजन्स लिख लो. मेरे तरफ से एक ही एडवाइस रहेगा आपको, प्लीज कॉपी द नोट्स. अगर आप नोट्स कॉपी कर लिए ना, अब कभी भी आपको डाउट रहेगा तो यू विल बी गेटिंग रिड ऑफ दैट डाउट. दैट इज द मेन सजेशंस आई वांट टू गिव टू यू. क्या है कि फर्स्ट कंक्लूजन दिया है कि
some cats or machines. Second one is all living beings are human beings. थर्ड वन क्या है कि some animals are cats. Fourth one is none animals are human beings. If you see, फर्स्ट वाला क्या है, some cats or machines, some एनिमल ह्यूमन बीइंग कट हो गया, कैट्स और मशीन्स बोला. पॉजिटिव नेगेटिव का क्या होगा, नो रिजल्ट होगा. ये सम नॉट है, ये नो रिजल्ट आएगा. ऑल लिविंग बीइंग्स और ह्यूमन बीइंग्स, लिविंग बीइंग्स पूरे ह्यूमन बीइंग से बोल रहा. दैट मीन्स इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेकंड एंड थर्ड वन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. दिस इज पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव. पॉजिटिव नेगेटिव का क्या होगा, नेगेटिव होगा, मगर इधर पॉजिटिव है तो इट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल. सम एनिमल्स और कैट्स, एनिमल्स और कैट्स के बारे में बात कर रहे हैं. एनिमल्स और कैट्स, लिविंग बीइंग्स ये होगा, कैट्स सम के टाइप पे चेक नहीं करना. थर्ड. फोर्थ वन क्या है, नन एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स. एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स, इधर से इधर आया, कैट से कैट आया, तो ये कौन सा स्टेटमेंट है, ये फर्स्ट सेकंड. तो पॉजिटिव नेगेटिव का क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, नन आएगा. एनिमल्स पे कितना है, 50 है, मगर इधर 100 एक्सपेंस है, सो इट इज ऑल्सो रॉन्ग. आफ्टर seeing this question, I think you have got the brief idea how to solve the questions when the examiner is asking 4 type statement type questions. Copy this. We will be solving one question which is asked in the RRB 2025 NTPC में पूछा ऐसा क्वेश्चन, we will be solving. While seeing the comments, I have seen most of the comments that, sir, are you having any tutorials? Are you giving offline coaching? बोल के बहुत comments मुझे आ रहे हैं. I am just taking 10th and 9th class students tuitions. मुझे थ्रू ऑनलाइन ही आप तक पहुंचने का मौका मिल रहा है, टाइम नहीं मिल रहा है. सो if any student want to take offline coaching of 9th 10th classes, you can see my demo class, that is biology or physics. If you like that video, you can approach me. A strong foundation today creates a successful tomorrow. Swami Vivekananda Tutorials, we provide expert offline coaching. Join our free demo class 10. Dreaming of a top rank in Polyset? Start your preparation with Swami Vivekananda Tutorials. Our expert faculty cheats. Admissions are open. Join our free demo class today. Next अपन क्वेश्चन PYQ सॉल्व करने वाले, दैट इज RRB NTPC ग्रेजुएट का क्वेश्चन है. 2025 में हुआ है क्वेश्चन. शिफ्ट टू, डेट मुझे याद नहीं है, बट आई हैव रिकवर्ड द क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या है कि सम clocks or watches
all doors or windows. None doors fourth one is some steps are not houses. ऐसा एक क्वेश्चन है जिसके इसके कंक्लूजन्स है, कंक्लूजन्स. फर्स्ट कंक्लूजन इज none doors are not houses. Second one is all watches are doors. Some locks are not steps. If we see the three conclusions, let's solve. Before solving, please take a second, take a minute, or read the question and think what are the possibilities and what are the steps you can include in this and solve the question. Let's solve. First one is, this is a positive statement, this is a positive, this is a negative, this is a negative. Here you can see none doors are not houses, means it is a combination of third and fourth one. But in the rules you have learned that in the statement, if there is two negative statements, there will be no result or conclusion. So simply you can cross it and you can mark it as wrong. Second one is all watches are doors. All watches are doors. That is, it is a direct statement of second one's direct statement. This second conclusion is the direct statement of second. So all watches are doors. Here value is 100, here 50, but watches have the value expense is 100. So simply you can cross. Third one is some locks are not steps. Locks are not steps. That is, here you can see it is a combination of first and fourth statement. Here from the chain rule you can know first, second one is watches, watches. First and second statement is not possible because here 50 value, here 50 value. If the common term doesn't have 100 in any of the statement, then the statement is not possible. You can recall that 1, 2, 3, 4 चार statement है, so the result will be first second बने तो if it is possible, it is also possible. It is also possible, but first and second possible ही नहीं है. तो फर्स्ट सेकंड ये पॉसिबल ही नहीं है, तो फर्स्ट और थर्ड नहीं बनेगा, सेकंड और फोर्थ भी नहीं बनेगा. हाँ, फर्स्ट और फोर्थ भी नहीं बनेगा. फ्रॉम दिस इट इज
फर्स्ट और फोर्थ है, फर्स्ट और फोर्थ भी नहीं बन रहा है, सो इट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल. सो आंसर क्या है? ओनली सॉरी, नाइदर 1 2 3 कंक्लूजन फॉलोस. कौन सा भी स्टेटमेंट फॉलो नहीं कर रहा है, बिकॉज आई विल बी सॉल्विंग ए वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस. क्योंकि अगर मैं एक ही टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करा, पूरे फॉलो हो गए, एक फॉलो हो गए, दो फॉलो हो गए, देन यू विल बी थिंकिंग अरे ये तो बट्टी मार रहा है, ये तो क्वेश्चन सिर्फ कॉपी कर रहा है. बट माय एम इज टू सॉल्व डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस. अगर आप ऐसे भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्लास में ही सॉल्व कर लिए तो इट विल बी इजी टू यू. इफ यू सी एनी क्वेश्चंस you can be easily solve. That is the main aim of this T2E YouTube channel. Please copy this. Now we will be heading to either or nor questions. Either nor question type of questions. ये type of questions prelims और mains both में देखने को मिलते हैं. But you have to, if you are learning using 150 method, up within seconds you can solve. Either nor type question. Before going into this topic, we will be learning some basics. As we learned in 150 method, there will be 4 type of statements. Here also there will be some basics you have to learn. If using 150 method, if we want to solve either nor type of questions, we have to learn some laws. फर्स्ट वाला क्या है कि फर्स्ट वन, either or not type question, if you want to falls under either or not type questions, there should be no result. नो रिजल्ट बनना चाहिए. कैसा मतलब? इफ यू टेक सम बुक्स और टेबल्स. सेकंड वन क्या है? all chairs or tables. Here if you allocate the values, it is 50 50 100 50. कॉमन टर्म पे वैल्यू क्या है? 50 50. दैट मीन्स नो रिजल्ट, रिजल्ट नहीं बन रहा है. देन it is satisfy the first point, that is the first rule of either or not type question. That means no result बनना चाहिए. Second one is subject or and predicate should be same in conclusion. कंक्लूजन में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट शुड भी सेम रहना. फॉर एग्जांपल ये स्टेटमेंट नहीं बन रहा है तो इसके कंक्लूजन्स भी रहेंगे. कंक्लूजन्स आर सम टेबल्स और चेयर्स. none chairs or tables. That means here you can see subject predicate, subject predicate. Here tables chairs, here chairs tables. If we change subject to predicate, predicate to subject, there is no issue, but the same terms should be seen in the both the conclusions, then only it will be qualifying the second law. Or third one is
Third one is there will be how you have divided the statements into 4 types. Here also either or nor is divided into 4 types: A type, E type, O type, and O type, I and O type. That is, if it is between A to O or I to O or I to E. If you see here, sum comes under E from statements. Different types of statement, there will be 4 statements: A, E, O, A, E, I, O. A, all. E, none. I, some. O, some not. Here some means E, none means I. That means E to I to E is there, but E to I is not there. So the answer is neither 1 or 2 follows. If, for example, if we write here none, and if we write here some, it will be written as I to E. So then it satisfies three laws: no result, loss. Second one, subject and predicate in the conclusion should be same. It is satisfying. Second, third one also it satisfies. So then answer will be either 1 or 2 follows. This is the main statement. That means my aim is simple. मुझे 2 types of situations I want to explain. If it is doesn't satisfies, what is the result? If it satisfies, what is the result? Please copy this. Now we will be solving a PYQ. After completing of this lecture, I will be sharing some questions which I have extracted from some previous examinations, and I will be posting in the description. You can click the description link and you can access the PYQs. If you solve the PYQs, you will be knowing how the examiner is asking the new pattern questions. The question is statement. All bush or plant. Second statement is some plant or tree. Conclusions are all bush or tree. Second one is no bush or tree.
let's solve the question. The first step to satisfy is it should not be satisfy. That means there should be no common term in both the statements. If you write the expense income, it is 100, it is 50, it is 50, it is 50. From this you can see here the subject is 50, here the predicate is 50. These are the both are the common terms. These are common term. This is the value is 50. So no conclusion comes. And the second one is you have to see in conclusion subject and predicate should be same. Subject predicate, subject predicate, subject and predicate also satisfying. So second one is subject and predicate are same, it is also satisfying. Third one is it comes under A to I, O to I, A to O, I to O, I to E. If it is falling under these circumstances, we have to see. If we see it is a I, this is A. I to A, there is any possibility? No. So option is neither. 1 or 2 follows. Next, I will be explaining one type of question in which it is satisfying. That means the main aim of my is to solve both type of questions. That's why I have chosen the first one is neither 1 or 2 follows. It satisfies first 2 rules, but third rule it doesn't satisfy. So the answer is neither 1 or 2 follows. Second question is it is a CHSL question, that is statement. Some tomatoes or potatoes. Second one is no tomato is a potato. Conclusions are first one is some onions. Some onions or tomatoes. Conclusions are some tomatoes or potatoes. Second one is no tomato is a potato. If you solve this question, we have to check it satisfies 3 rules. That is, first one, there should be no 100 value, income value should not be 100 in the statements. Here we can see the value are 50, 50, 50, 50. Here the value is 50, 50. So it satisfies first one. Second one is subject and predicate should be same. Here tomato, potato, tomato, potato. The second one also follows. Third one is
A2O, I2O, I2E. Doesn't it falls under these case? Then it is also, then it will be either 1 or 2. If you check sum means E. Sorry. Here no means AEI. Sum means E. If you see here I and E, that means it satisfies 3 rules. Then the answer will be either 1 or 2 follows. This is CHSL 2025 question. Please copy this question. Before ending this video, मैं एक बात शेयर करना चाह रहा हूं आप सबसे. आप टेंशन मत लीजिए, टेंशन छोड़ दीजिए और T2E से जुड़ जाइए. If you are member of this T2E family from earlier, thank you for trusting on me. और मेरा एक ही मंत्र है, टॉपिक्स अच्छा से पढ़ना है, कॉन्सेप्ट मजबूत करना है और एक कदम सिलेक्शन की ओर जाना है. If you like my video, please share with your friends and family members. Don't forget to like this video and subscribe to my channel. Thank you. आप सबको मेरे तरफ से धन्यवाद, क्योंकि पहले से आखिरी तक देखने के वास्ते. थैंक यू. जय हिंद.